तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स क्लास 10th। अच्छा पहले मुझे ये बताइए, हम इसको सो reproduction, there are two types, sexual, asexual, which is better? आपने मुझे बताना है, especially boys, raise your hands. So out of asexual and sexual, which reproduction is essential for the evolution of the organisms? Evolution, the changes in the organisms, right? evolution के लिए कौन सी रिप्रोडक्शन जरूरी है या कौन सी रिप्रोडक्शन बेटर है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एसेक्सुअल? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस वेरिएशंस, इट प्रोड्यूसेस चेंजेस, तभी एवोल्यूशन हो, राइट? इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यस 10th सी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल की बायपेरेंटल? Biparental, two parents are required, male and female, both parents are required for, sexual reproduction. In sexual reproduction in humans की अगर हम बात करें, तो, the sperms have to be injected in the vagina of the female. But if the male has some sexually related problems, for example, sexually related problems means, for example, viral problems such as AIDS, such as warts, bacterial problems such as gonorrhea, such as syphilis. So these infections, then these infections can be transmitted from male to female during sexual intercourse, right? सेकेंड थिंग, क्या प्रॉब्लम्स है हमारे सेक्सुअल इंटरकोर्स में? एक तो जो इन्फेक्शंस है वो ट्रांसमिट मे बी फ्रॉम मेल्स टू फीमेल्स और फ्रॉम फीमेल्स टू मेल्स, एनीवे, राइट? दैट सेकेंड थिंग. द अदर प्रॉब्लम इज if the couple does not want child, then the sexual intercourse, it has the most probability to introduce pregnancy. If the couple does not or do not want child, then there should be some methods which prevent pregnancy. There should be some methods which prevent, transmission of diseases from one partner to another partner. ठीक है? तो हमारे पास दो चीजें हैं. तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? That is contraceptive measures. We are talking about contraception. Contraception तो जो है, that is to prevent pregnancy or to prevent transmission of STDs. बेटा कई बार अगर नहीं पता हो तो वहां पे एसटीडी, बाकी सब कुछ आता है बट एसटीडी का मतलब ही नहीं पता. तो एसटीडी यू शुड नो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. लिख लो एसटीडी की फुल फॉर्म क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. These are of two types: bacterial and viral. Which are the bacterial? Syphilis, gonorrhea. ठीक है, I hope it's visible. Then viral, such as warts, other और भी होते हैं but ये main है, and another is AIDS.
एड्स जो है इट इज कॉज्ड बाय वायरस, HIV caused by HIV. And what is the full form of HIV? Human immunodeficiency virus. It is caused by human immunodeficiency virus. ठीक है जी, तो ये है. So contraceptive measures are to prevent pregnancy and to prevent transmission of diseases, right? Then next आ जाता है बेटा कि हमारे पास क्या टाइप्स के कौन से हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स, राइट? तो हम नेक्स्ट जाते हैं टाइप्स ऑफ contraceptive measures. So one is natural. Then another is artificial or induced. Natural तो सिंपल है, abstinence from sexual intercourse. Abstinence means no sexual intercourse, है ना? The two people don't mate. This is a natural method. But another is artificial, जो सबसे ज्यादा important है. इसमें barrier method, then there is present chemical methods, and third is surgical methods. तो बेटा to prevent pregnancy, mainly contraception is to prevent pregnancy. There are mainly three methods: barrier method, chemical method, surgical method. Barrier method को हम और क्या कह देते हैं? Mechanical. This is also called as mechanical method. Mechanical barriers, physical barriers, one and the same thing. Physical barriers, mechanical barriers, these are chemical barriers, these are surgical barriers. ठीक है? But barriers हम इनको ही मेन कहते हैं, chemical method, surgical method. Then, what are the barriers? इनका क्या है? Purpose क्या है? To prevent fusion of male and female gametes. उन दोनों की किसी तरह फ्यूजन ना हो, या फिर टू प्रिवेंट इम्प्लांटेशन. फ्यूजन हो भी गई तो इम्प्लांटेशन, दैट इज अटैचिंग ऑफ, यू नो व्हाट इज इम्प्लांटेशन? यस एनीबडी? हाँ जी, मेरे पास आ जाइए. आदित्य 10th है. आदित्य, हाँ जी, आ जाइए आ जाइए.
What do you mean by, implantation? आजा बेटा माइक के पास आ. Yes, ma'am. हाँ, what is implantation बेटा? अच्छा चल, मैं इधर देख, सामने देख, छोड़ दे, पीछे को छोड़ दे, सीधे खड़े हो, सीधे खड़े हो. हाँ, सीधे खड़े हो. हाँ, यहीं से ही बोलना जोर से. What is fertilization? Tell me. उधर छोड़, कोई और क्या बोल रहा है, leave it. Tell me, what is fertilization? Fusion of male and female. Very good. उसके बाद क्या बनता है fertilization के बाद? What is the product? Zygote. क्या बनता है? Zygote, right? Right? Zygote नहीं, zygote, right? It's simple zygote. Then zygote divides. किसी और की बात नहीं सुननी है, सिर्फ मेरी तरफ ध्यान देना है. Zygote divides to form a multicellular structure. What is that called as? Yes, ma'am. Zygote divide करता है कि नहीं? Yes or no? Zygote is single celled. It divides to form many celled structure. What is that called? ध्यान से अभी यहीं खड़े रहना है. द गर्ल सिटिंग ऑन द सेकेंड बेंच. हाँ, जिसके पास माइक है खड़े हो जाओ बेटा आप. हाँ. आप मुझे बताइए, zygote divides to form what? Zygote divides to form a multicellular structure. What is it called as? मैम एम्ब्रॉय. एम्ब्रियो. बेटा थोड़ा सा है ना, बड़ी एक क्रिस्प सी ये टर्म्स होनी चाहिए. यू आर studying in an English medium school. It's embryo, right? Then embryo goes into uterus. But what happens to the embryo? ठीक है बेटा, आदित्य पता चला zygote क्या बनाता है? Embryo बनाता है. Then embryo goes into uterus. What happens to the embryo in the uterus? मैम इट बिकम्स It becomes fetus. यही खड़े रहना है, देखना है आदित्य. वो तो ठीक है. How it obtains nutrition from the mother? मैम फ्रॉम प्लेसेंटा. प्लेसेंटा कैसे बनता है? What is implantation? मैम इट इज जॉइंट बिटवीन मदर एंड द चाइल्ड. वो ठीक है बेटा. इम्प्लांटेशन क्या चीज होती है? देखो इधर देखो मेरी बात. इम्प्लांटेशन होता है कि ये थिक वॉल है यूट्रस की, है ना. दिस इज थिक वॉल ऑफ यूट्रस. द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द यूट्रस. दैट इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन. दोबारा से एवरीबडी सी दैट. दिस इज बेटा बहुत सिंपल सी टर्म है. क्या है? 2 नंबर की आ जाएगी. और फिर हमें क्लैरिटी नहीं है. यहां से एम्ब्रियो आया, इट इज एम्बेडेड. ये एम्ब्रियो है, it is embedded in the uterus, in the wall of the uterus. और फिर इसके बाहर फिर ये दीवार बन जाती है, यूट्रस की वॉल दोबारा से बन जाती है. दिस इज यूट्रस वॉल, राइट? सो व्हाट इज इम्प्लांटेशन? एवरीबडी रिपीट्स. जोर से बोलो, किसी तरह ताकि पता चले. एम्बेडिंग ऑफ द एम्ब्रियो इन द वॉल ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन. पहले इम्प्लांटेशन होगी, फिर प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड बनेगा. ये प्लेसेंटा बना, फिर ये अम्बिलिकल कॉर्ड बना. इज इट ओके? यस. जल्दी से अब आदित्य बैठ जाओ बेटा. आप बैठो. आदित्य मुझे अब जल्दी से इम्प्लांटेशन की टर्म बताएगा. हाँ. A bedding of embryo in whole of embryo in whole of nucleus is known as in wall of nucleus. uterus. Uterus is nucleus known as if I'm not uterus. wrong, nucleus. Embedding of embryo in the wall of the मैं भी तुम्हारी तरह न्यूक्लियस बोल रही हूँ. in the wall of the uterus is called as implantation. समझा करो. पता क्या प्रॉब्लम है? बैठो. आपको ना क्रैमिंग की आदत पड़ गई थी. रट्टे मरवा दो, हम मार लेंगे. नहीं, समझो. embedding, धसना, बीच में धस जाना. embedding of the, या सिंपल embedding ना याद आ जाए, covering of the embryo by the uterus wall is called as implantation. But embedding is the most appropriate term. ठीक है? तो ये क्या करता है
कि ये यूट्रस वॉल को इस तरह कर देता है सो दैट द एम्ब्रियो डज नॉट, यहां तक तो एम्ब्रियो आ जाता है कुछ बैरियर से, बट इट डज नॉट एम्बेड इन द यूट्रस वॉल, सो टू प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? बेटा डोंट थिंक कि भी हमारी बुक में तो बस एक लाइन लिखी है हमने वही चीज याद करनी है। पहली बात तो जो अब पेपर आएंगे वो सब क्रिटिकल थिंकिंग वाले पेपर आएंगे, क्रैमिंग नहीं। ठीक है जी, सो क्रिटिकल थिंकिंग के पेपर आएंगे तो समझ के करना, राइट? सो बैरियर मेथड्स कौन से है? बैरियर मेथड्स सबसे पहले आ जाते हैं कंडोम्स, द मोस्ट सिंपलेस्ट, नो साइड इफेक्ट्स। ठीक है, सबसे सिंपल है यूज करना और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एंड द बेस्ट मेथड। ठीक है क्या है? कंडोम्स क्या है? डोंट थिंक, पहले तो हमारे को ये क्लियर करना है कि ये एक सिंपल चैप्टर है लाइक योर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डोंट थिंक कि मैम कंडोम्स के बारे में बता रही है, एवरीबडी शुड नो दिस। ठीक है, एंड यू पीपल शुड नो एट दिस एज, इस टाइम बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हो जाती है बच्चों को जब उन्हें क्लैरिटी नहीं होती। तो सिंपल कंडोम्स आर द रबर शीट्स, रबर या सिलिकॉन शीट्स which cover the penis of the males generally, vagina of the females, female condoms भी होती है but generally male condoms. So condoms are the plastic or sorry not plastic, rubber or silicone sheets, cap like structures which covers, condoms क्या करते हैं? they cover the penis so that जो सीमन है it is released not in the vagina but it is released in the condom only, condom में ही आ जाएगा, तो वो वेजाइना में नहीं जाएगा, तो कोई उसके साथ कोई माइक्रोब्स वेजाइना में नहीं जाएंगे। और अगर फीमेल कंडोम है तो फीमेल वेजाइना के ऊपर हम पैक करते हैं और स्पर्म्स डू नॉट कम या सीमन डज नॉट कम इन कांटेक्ट विद द वेजाइना, सो नो ट्रांसमिशन ऑफ एनी डिजीज। कंडोम्स लिखो यहाँ पे, बेस्ट मेथड, नो साइड इफेक्ट्स। देन सेकेंड इज another is copper tea. Why it is named as copper tea? Because it is a T-shaped structure. ऐसे करके इस तरह से एक थ्रेड है और T-shaped structure होता है, that's why it is called as copper tea. इसके क्या functions है? It is inserted या implanted, implanted और inserted, कुछ भी लिख सकते हो जो आपको याद आ जाए। Inserted in the uterus of female, ये फीमेल के लिए ही है, इन द यूट्रस ऑफ द फीमेल। इसलिए कॉपर टी को हम और क्या बोल देते हैं, याद रखो एवरीबडी, आईयूडी। नहीं याद रहता कोई प्रॉब्लम नहीं, पता होना चाहिए, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। आईयूडी का मतलब है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ठीक है जी, 10th ए में क्या हो रहा है बेटा? लाइट जा रही है कि तुम्हारा प्रोजेक्टर में गड़बड़ आ रही है? मैम विजिबल नहीं होता पीछे से, इसलिए लाइट्स ऑफ करी है। अच्छा, लाइट्स तो ऑफ की हुई है बट ये क्या थोड़ा सा मुझे डार्क नजर आ रहा था ना, क्या ये प्रोजेक्टर की प्रॉब्लम आ रही है? यस। तो आपको पता चल रहा है ना, बट एवर आंसर। तो कॉपर टी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है जो इट इज इंसर्टेड इन द यूट्रस ऑफ द फीमेल। यहाँ पे लिख लो फंक्शन क्या है, इट किल्स स्पर्म्स, चले गए स्पर्म्स बट उनको मार देती है, इट किल्स स्पर्म्स बट फिर भी कुछ बच तो जाते ही होंगे। सेकेंड पॉइंट, इट मेक्स यूट्रस नॉन वायबल,
फॉर इम्प्लांटेशन, या इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन. सेकंड है इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन. ठीक है, बट इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? What are the disadvantages of copper tea? First thing, it has to be it has to be implanted by some trained doctor. It has to be, हमें ये हम खुद नहीं यूज कर सकते, हमें किसी डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी. It has to be implanted by some trained doctor or health professional. Second thing, it sometimes causes irritation in the uterus. It sometimes causes irritation in the uterus. ये इसके साइड इफेक्ट्स है. उसके बाद आ जाते हैं बेटा, सेकंड आ जाते हैं केमिकल मेथड्स. केमिकल मेथड्स में आ जाते हैं पिल्स. These pills, they contain estrogen and progesterone. Prevent ovulation. It prevent ovulation. Who will tell me? Now, 10th C, Gurleen. 10th C, Gurleen. Gurleen is there? आजा बेटा आजा, जल्दी से जल्दी से. Tell me, what is ovulation? Ma'am, maturation of egg. It's not maturation. Not maturation. It is release of egg from the ovary. लिखो everybody. Write down bracket में. बैठो बेटा. Release of egg from the ovary is called as ovulation. ये define the following, है ना? Implantation, ovulation, fertilization, ये चीजें आ सकती है. So ovulation is release of egg from the ovary. And these pills, they prevent ovulation. और ovulation अगर egg निकलेगा ही नहीं, fallopian tubes में पहुंचेगा ही नहीं, so how could fertilization happen? Right? But disadvantage लिख लीजिए. Disadvantage क्या है? That as these pills are hormonal, है ना, hormones है ना, female sex hormones high level है. As these pills consist of hormones, they may cause hormonal problems in the body. इसके कई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. इवन बहुत सारे आजकल देखा गया है कि भाई अगर ये पिल ज्यादा टाइम तक लें तो इट मे इंड्यूस सर्विकल कैंसर. सर्विकल कैंसर तो नहीं, बट ब्रेस्ट कैंसर जैसी चीजें हो सकती. ठीक है, और नोजिया, वोमिटिंग, इसकी जो फीलिंग्स है वो तो आती ही है. ठीक है, और यहाँ पे एक स्टार डाल, ये आपकी जीके के लिए है, आपके एग्जाम के लिए तो नहीं है. सहेली is a non-steroidal. Steroidal means hormones, so sex hormones. Non-steroidal pill used as contraceptive pill. काम इसका यही है, बट इसमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं है, कुछ और केमिकल्स है, which prevent ovulation. ठीक है, और ये इंडिया में डेवलप हुई है. एनडीआरआई लखनऊ, नेशनल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, एनडीआरआई लखनऊ में डेवलप हुई. ठीक है जी. देन नेक्स्ट इज सर्जिकल मेथड्स. ये दोनों रिवर्सिबल है. लिखो, मैकेनिकल बैरियर्स एंड केमिकल मेथड्स आर रिवर्सिबल. रिवर्सिबल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. हम पिल्स लेनी बंद कर दें तो प्रेगनेंसी हो सकती है.
मैकेनिकल बैरियर्स कॉपर टी निकलवा दें, प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड इज सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड्स रिक्वायर ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स। पहली बात तो सर्जिकल मेथड्स रिक्वायर ट्रेन्ड हेल्थ प्रोफेशनल्स। सेकेंड पॉइंट है रिवर्सिबल, तो ये भी हो जाती है बट मेनली इरिवर्सिबल, मेनली इरिवर्सिबल। दो टाइप की आ जाती है, वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। वासेक्टोमी कटिंग एंड टाइंग, वास्ट डिफरेंस। अभी ये लिखो फिर मैं आपको बता। ट्यूबेक्टोमी कटिंग एंड टाइंग ओविडक्ट्स। ये हमने वास्ट डिफरेंस को यहां से काट दिया और दोनों को धागे से बांध दिया, so that the sperms does not come out through penis। इसी तरह से यहां पर भी यहां से भी हमने वास्ट डिफरेंस आर कट एंड टाइड बाय ए थ्रेड। ये बना लोगे तो आपको जो है बेटा इजी याद रहेगा। टेस्टिस, यू नो, मैंने वहां पे पूरा नहीं बनाया, वो मतलब यूरिनरी ब्लैडर, बट ये तो है ही। एंड दिस इज वास्ट डिफरेंस। सो इन वासेक्टोमी ध्यान से समझो, यहाँ पे प्रोस्ट्रेट ग्लैंड है, यहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स है, उसकी सिक्रीशंस तो आ ही रही है। यहाँ पे कूपर्स ग्लैंड है, राइट। तो सेमिनल प्लाज्मा फ्लूइड पार्ट तो आ ही रहा है बट स्पर्म्स नहीं आ रही है। सो इन वासेक्टोमी सीमन विल बी विदाउट स्पर्म्स। तो अगर स्पर्म्स ही नहीं जाएंगे फीमेल में तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। सो इन वासेक्टोमी in males, obviously vasectomy in males, the semen will be without sperms. And what happens in tubectomy?
तो हेयर ओविडक्ट्स, यहाँ पे ट्यूबेक्टोमी में ओविडक्ट्स आर कट एंड टाइड सो दैट द एग यहीं रह गया, वो आगे नहीं गया, और स्पर्म्स यहां से नहीं जा रही, वो एग तक नहीं पहुंच रही। ठीक है जी। सो यहाँ पे स्पर्म्स बाहर नहीं आ रहे, और अब अगर ट्यूबेक्टोमी हो रही है, देन द ओविडक्ट्स आर कट so that either the sperms do not reach the egg or the egg does not reach the sperms. Tubectomy, ovulation occurs, but the eggs and the sperm do not meet with each other. बेटा कुछ केसेस में किसी भी कारण से ये रिवर्सिबल करने की कोशिश कर सकते हैं। आई डोंट नो कि ये 100% पॉसिबल है भी कि नहीं, बट कुछ केसेस में कर देते हैं। ये सक्सेसफुल हो या नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द हेल्थ ऑफ द फीमेल एंड हेल्थ ऑफ द मेल, कि ये जो है दोबारा से इसको काट के दोबारा से जोड़ दो, बट नॉट 100% सक्सेस। ठीक है, सो इट इज रिवर्सिबल, इट मे बी रिवर्सिबल इन सम केसेस। ठीक है, बट वो भी सर्जिकल ही करना पड़ेगा। ओके, देन there is one more method, that is MTP or abortion. Medical termination of pregnancy. प्रेगनेंसी हो गई, बच्चा बन रहा है, उसको मार के बाहर निकालना, दैट इज इट शुड बी ट्रीटेड एज द मर्डर, है ना। हमारे अगर मैं मुझसे पूछा जाए तो ये हमारे कानून में एक मर्डर वाली कैटेगरी में रखना चाहिए, क्योंकि बच्चा हमने देखा नहीं है, इसलिए उसको अंदर ही मार दो। दैट इज द केस इन केस ऑफ एमटीपी। ठीक है, तो generally in India this is done for female feticide in most of the cases, sometimes for unwanted pregnancies, or in some cases if there are some severe genetic diseases to the child, then abortion is done at very early stages of pregnancy. ठीक है, बट ठीक है अगर वो नॉर्मल नहीं है, जेनेटिक डिजीजेस है जो हमें पहले 3 महीने में पता चल जाते हैं, उस टाइम अगर हम एमटीपी कर दें, वैसे तो किसी भी स्टेज पे नहीं करना चाहिए, बट अगर उस टाइम कर दें, इट्स ओके बिकॉज इट इज द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड ऑल्सो। ठीक है, बट इन केस ऑफ फीमेल feticide it is banned, it is illegal, and for unwanted pregnancies, ठीक है, वो भी हमें थोड़ा सा केयर करनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट हियर, दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स। जल्दी से आपके पास वर्कशीट आ गई है, टेक 5 minutes, डू दीज क्वेश्चंस। Any doubt you can ask, you are free to ask me question if I am able to answer that. ऑप्शंस ठीक कर लीजिए। ए कर लीजिए, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। बी कर लीजिए, कॉपर टी। सी है बोथ ए एंड बी। डी है नन ऑफ दीज। नन ऑफ, और
क्वेश्चन नंबर 6 में सी ऑप्शन कर लीजिए, एब्स्टिनेंस और नो इंटरकोर्स। हाँ जी, जल्दी से 10 थे अर्शदीप एंड दीपक, जल्दी से आ जाओ बेटा। अर्शदीप आ जा बेटा। दूसरा, इफ दीपक इज देयर, अर्शदीप कम कम कम, आइए आइए आइए, दीपक इज देयर। चलिए अर्शदीप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कंडोम्स? मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, बॉम्बे, दे प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम एसटीडीज, क्योंकि स्पर्म्स पहुंचते ही नहीं है। हाँ जी दीपक, सेकंड क्वेश्चन, सर्जिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इन मेल्स इज? मैम बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, वासेक्टोमी, बिल्कुल ठीक है। कोइटस इंटरप्टस होता है बेटा कि सीमन बाहर ही निकाल देना, फीमेल के वेजाइना में डालना ही नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बैठो बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज जपजीत एंड एकम, 10th बी। अब 10th बी वाले बच्चे यहाँ पे आ गए हैं, देखें जरा, जपजीत आ जाओ, एकम, एकम कहाँ पे है? वो दो, बोथ का। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच व्हाट इज द रोल ऑफ कॉपर टी इन फीमेल कॉन्ट्रसेप्शन? Prevents fertilization, option B. A contraceptive method that works by creating a mechanical barrier is? क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट आ जाएगा बेटा, आईयूडी मेनली, है ना। मैकेनिकल बैरियर इज आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस या कॉपर टी। ठीक है, बैठो बेटा। आईयूडी ब्रैकेट में लिख लो, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस या कॉपर टी। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाइए सी सेक्शन में। अच्छा, बी में एक सुगंधा भी है, सुगंधा इज देयर? सेक्शन बी, सुगंधा एब्सेंट। एब्सेंट है, नो प्रॉब्लम। सो सी, गुरलीन, मिताली, ओंकार, ये तीनों आ जाओ। गुरलीन, मिताली एंड ओंकार, आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो? मैम ऑप्शन डी, कॉपर टी। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी, कॉपर टी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन? मैम ऑप्शन सी, नो इंटरकोर्स। Yes, no intercourse, that is option C. Next is Onkar. Question number 7, which hormone is suppressed? ये नहीं पता है आपको तो बोलो। यस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर पता है? सी। सी है, एफएसएच। मैम सी ऑप्शन। हाँ जी, सी ऑप्शन बेटा, एक मिनट सर। एफएसएच एंड एलएच, कैन यू टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ एफएसएच एंड एलएच? हेलो, हाँ जी यस बोलो। मैम फुल फॉर्म नहीं पता। नहीं पता ना, मैं बता देती हूँ। ये पहले तो दोनों तो है, लिख लो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड, या ये सिंपल एलएच इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नहीं भी पता, नहीं भी लिखने कोई बात नहीं, बट ये लिख लीजिए कि एफएसएच एंड एलएच आर गोनेडोट्रोफिन्स। which stimulate sex organs. Which stimulates sex organs, that is gonadotrophins. ठीक है, तो ओव्यूलेशन कहां से होनी है? ओवरी से होनी है। अगर गोनेडोट्रोफिन्स नहीं होंगे तो ओव्यूलेशन नहीं होगी। ठीक है जी। सो
नेक्स्ट आ जाता है बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट मेरे पास आ जाइए बेटा 10th ए में से दिया, दिया गुरकीरत, दिया एंड गुरकीरत। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, oral contraceptive pills primarily act by, preventing ovulation. very good, question number 8 C। हाँ जी गुरकीरत, which of the following prevents both pregnancy and STDs? ऑप्शन सी। एसटीडी, ओरल पिल से तो ओव्यूलेशन नहीं होगी, एसटीडी तो स्पर्म्स और उनसे इंटरकोर्स से होता है। मैम कॉपर टी। नहीं बेटा, सिर्फ कंडोम, सिर्फ कंडोम्स। ठीक है, बैठो यहाँ पे लिखो अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार डाल के लिखो, एनसीईआरटी में भी आपके क्वेश्चन है। ओनली कंडोम्स आर द बैरियर्स या कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स विच प्रिवेंट एसटीडीज। क्योंकि अगर पेनिस और वेजाइना कांटेक्ट में आया, किसी एक को एसटीडी है तो इट विल ट्रांसफर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए, हाँ जी मेरे पास आ रहा है 10th बी तेजवीर कौर, 10th बी तेजवीर, तेजवीर इज देयर। आजा बेटा आजा जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैकेनिकल बैरियर मेथड? Both A and B. नॉट ए मैकेनिकल बैरियर, ये तो मैकेनिकल बैरियर है ही, ये नहीं है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तो हम दवाइयां खाते हैं, ठीक है। नॉट ए मैकेनिकल बैरियर मीन्स कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। बैठो बेटा। देन वासेक्टोमी, हाँ जी करो जरा, रीजन असर्शन कीजिए। एंड 10th बी में से परनीत, 10th बी परनीत, आ जाओ बेटा जल्दी से। हाँ जी बेटा, वासेक्टोमी मेल्स प्रिवेंट्स द रिलीज ऑफ स्पर्म्स ड्यूरिंग इजैक्यूलेशन, इज इट ट्रू? परनीत, Ma'am, yes. बिल्कुल ठीक है। इन वासेक्टोमी द यूरेथ्रा इज कट एंड टाइड, इट इज ट्रू? Ma'am, yes. यूरेथ्रा Ma'am, no. क्या कट होता है, पहले बताओ जल्दी से। वास डिफरेंस, यूरेथ्रा तो ये है। Ma'am, reason is false. रीजन क्या, कट क्या होता है आप मुझे ये बताओ, विच इज कट एंड टाइड? Vast difference. वास डिफरेंस, अगर यूरेथ्रा को कट कर दोगे बेटा, बेचारा मेल तो यूरिन भी नहीं कर पाएगा, कैसे काम होगा? थोड़ा सा सोचो, है ना। सो वास डिफरेंस इज कट, सो assertion correct, reason wrong, and option C is correct। बैठो बेटा। 10th C नैतिक, 10th C नैतिक, हाँ जी बेटा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर टेम्परेरी बर्थ कंट्रोल मेथड, ट्रू की फॉल्स? ट्रू। ट्रू नहीं है, टेम्परेरी, हाँ ठीक है, दीज आर ट्रू। दे कंटेन हॉर्मोन्स विच इनहिबिट द रिलीज ऑफ एग्स, ट्रू की फॉल्स? ट्रू। True, this is also true, they prevent ovulation, but both are different statements. That is why option B Bombay is correct। रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं है, टेम्परेरी क्यों है? बिकॉज यहाँ पे रीजन क्या था कि इफ वी स्टॉप टेकिंग पिल्स देन प्रेगनेंसी कैन अकर। ये इसका आंसर था कि पिल्स को लेना बंद कर दो तो प्रेगनेंसी हो सकती। देन नेक्स्ट, हाँ जी जसलीन मान, जसलीन मान 10th C, आ जाओ बेटा जल्दी से आ जाओ। हाँ जी, ट्यूबेक्टोमी इज ए सर्जिकल मेथड यूज्ड इन फीमेल्स, ट्रू की फॉल्स?
जोर से बोलो बेटा। ट्रू है जी, हाँ। इन ट्यूबेक्टोमी द फेलोपियन ट्यूब्स आर कट एंड टाइड टू प्रिवेंट एग ट्रांसपोर्ट। ट्रू की फॉल्स? ट्रू। ट्रू है। एंड रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन, यस और नो? No. नहीं देखो, सर्जिकल मेथड यूज्ड इन फीमेल्स। क्यों? क्योंकि फेलोपियन ट्यूब्स कट होती है। ठीक है, ए ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, तो अब 5 मिनट और लो और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखो। टेक 5 मिनट्स, डू सब्जेक्टिव। पहले केस स्टडी करो जरा, डू केस स्टडी फर्स्ट। This point is known as point of contact. this center of the circle. So this is any radius. Radius will always be perpendicular to the tangent at the point of contact. What is the second theorem? The length of tangent drawn from an external point to a circle are equal. Yes. Suppose we have a circle. Let's say we have a circle. Right? Now, if we draw two tangents to this circle from any external point, let's say this is external point and we are drawing two tangents to this circle. Right, Bachu? Yes. Now, let's say this point is T. This is P, this is Q. So the length of PT is equal to QT. These are the two theorems which we'll be using. Right? The length of the two tangents drawn from an external point to a circle is equal. How many tangents, students, we can draw from an external point to a circle? How many tangents we can draw? Two. Two. Only two. Right? Right. So we'll be doing the questions and wherever whatever concept will be used, we'll highlight that. Have you got the assignment, students? Yes. Open the assignment and first question. Question number 1 is the length of a tangent drawn to a circle of radius 9 centimeter from a point at a distance of 41 centimeter. Two more theorems I would like to highlight. Let's say we have a circle. Now this is the center of the circle. If you have drawn two tangents from external point, right, Bacho? These angles are always, if this angle is theta and this is alpha, what is the sum of alpha plus theta? 180 degree. 180 degree. Why it is 180 degree? Because they are supplementary angles. Supplementary, but why? Can you tell me why they are supplementary? Anyone? See, if you take, this is a quadrilateral. This is a quadrilateral. Yes. What is this angle? 90 degree. 90 degree. What is this angle? 90 degree. What is the sum of the angles of the quadrilateral? 60 degree. 360 degree. If the sum of these two are 180, so this will also be 180. Understood this thing? Yes. Another theorem is the line joining the center of the circle and the external point from which the tangents are drawn. These angles are equal. Means this is the angle bisector of angle POQ.
OT bisects angle POQ. Is this clear, जी? So this is another theorem. इसका proof भी आ सकता है आपको students पेपर में. इसका how to do this proof? Have you done this proof? Yes. Yes. How you have done it? By congruency. You have to take two triangles, this one and this one. We know that this is radii. Is this clear? Yes. So these are equal. OT is common and these angles are 90 degree. So by RHS you have to apply RHS. So these two triangles will be congruent and then by CPCT the angles will be equal. Is this clear? Shall I need to do this theorem in detail? Hanji bache, how many want I shall take this theorem in detail? Right. So we'll come back to the question first. The question is the length of a tangent drawn to a circle of radius 9 cm. Let's say we have a circle. Right? Its radius is 9 centimeter. Radius is 9 centimeter from a point at a distance of 41 centimeter from the center of the circle. Let's say this is a point and this distance is 41 centimeter. Radius is 9 centimeter. we have to find the length of the tangent. How to find out? Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. Please apply and tell me. This angle will be 90 degree. This angle will be 90 degree, students. Yes. Right. Done. How much? What is the length? 40 centimeter. 40 centimeter. Students, see how to do this. P. By Pythagoras theorem, we'll have OT square is equal to OP square plus PT square. So we have to find PT square. (41 square minus 9 square) equal to, right? So now students, इसमें ना जब कैलकुलेशन करनी है, how to do the calculation? इसको 41 का स्क्वायर करोगे, 9 का स्क्वायर करोगे, that will be quite cumbersome, difficult हो जाएगा. So better है apply the identity a minus b, a plus b. Will that be easier? Yes. So what this becomes? Is this clear? अब इसको स्क्वायरिंग करनी है. As you people used to do it in the Heron's formula, make the squares. PT square will be equal to, can you write 2 into 4 into 4 into 2 into 5 into 5? Is this clear? Yes. Yes. So bearing 4, 2 and 5. So PT square will be equal to 2 into 4 into 5 whole square. So which will be equal to 40 square and PT will be equal to 40 centimeter. If you are comfortable कि आपने 41 का स्क्वायर लेके 9 का स्क्वायर लेके करना, that is up to you, right? So this I think is the easier way. So we move on to the next question. Second question. The area of a sector of a circle. First of all, tell me, you know what is a sector and a segment? You know what is a sector? Sector of a circle. Anyone knows? Please tell me. If any one of you knows what is the sector of a circle. This is there in your next chapter, that is area related to circle. If we draw a... Anji, please tell me. सर स्टार्ट नहीं किया अभी. तो कर नहीं बचा, फिर भी आपको पता होना चाहिए. देखिए right now, if you take the circle, right, the region between the two radii
and the circle, this total, right? There are two sectors in this circle. One is this one, another is this one. This is known as, the bigger one is known as major sector, and this is known as minor sector, right? Is this clear? So now, since it's the area question, what is the formula for this area? Let's say this is the angle theta. This is the angle theta. Then the area of this minor sector is theta upon 360 into pi r square. Area of circle is pi r square. So we are taking the area of this only particular region. If you have to find the area of the major sector, what will be that? 360 minus theta upon 360. Understood? Understood or not? Yes. Okay, so we will be using this concept in this question. The area of a sector of a circle of radius 1 centimeter cut off by an arc of length. Okay. So we leave this question for the next chapter, right? So we'll move on to the third question, bache. In the given figure, PA is a tangent from an external point P to a circle with center O. Diagram is given to you, right? PA is a tangent if angle POB is 115 degree, then angle APO is equal to. Yes, students, how to do this question? There is a circle, right? PA is a tangent. Let's say this is the diameter, right? Right, bacho? Now this angle is 115 degree, right? And what we have to find, angle POB is 115 degree, APO. APO. Since we have to find this angle. Can you do it, students? Yes. How? By linear pair, then angles are property. Yes. As we know, this is, let's say this is B. Angle AOB is a straight angle. So angle POB and AP and AOB or AOP both are, let's say this is theta. So 180 minus 115 equal to, is this clear, students? So theta will be equal to 65. 65. Now, which concept you have to apply? Angle sum Angle sum property. As this is a tangent, this angle will be 90 degree, right? So 90 plus theta plus 90 plus theta plus, let's say this is angle F. A ले लिया बच्चे हमने, equal to 180 degree. So A will be equal to 180 minus 90 minus theta. So that will be 90 minus 65 degree. Yes. थीटा वाली कैसे आई? So what it will be? 25. Right, bachcho? Another way of doing this can be the exterior angle property, students. सर Haji, सर कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा, आप फिर से रिपीट करेंगे? this question only? यस सर. Right, I'll explain this. See, diagram clear है आपको? यस. Right. So now, this is a straight line. This angle is given 115 degree. So this total is 180 degree. Linear pair. This is linear pair. Yes. Now, by applying the concept of linear pair, this theta plus 150. This is equal to 180 degree. Yes or no? Yes. So therefore,
180 degree equal to 115 plus theta. So theta will be equal to 180 minus 115, 65 degree. Is this clear? Yes. Now you have to take triangle POA. Triangle POA. So apply the angle sum property. Angle A plus angle theta plus, let's say this is angle B, is equal to 180 degree, students. Yes. What is the value of B? What is the value of B? 90 degree. Yes. This is 90 or not? Yes. So what we'll have is, we have to find out theta is 65 degree, B is 90 degree, the angle sum property 180 degree. Is it clear? Yes. Solve this. A plus 155 A will be equal to 25. Now is it clear or not, beta? Yes. Hanji, the student in section 8. Is it clear now? So yes. Right. So we move on to the next question. A piece of wire 20 centimeter is bent into the form of an arc of a circle of radius 60 upon pi centimeter. The angle subtended by the arc at the center of the circle is. Yes. Piece of wire 20 centimeter long is bent into the form of an arc of a circle. Now just try to understand the question. There is a circle, right? What do you mean by arc? This is your arc, right? This length of the arc is given 20 centimeters. This is also related to the next chapter, students, right? So you want me to cover, I can do it, but it will be better when we'll do it later on, right? Is it clear, students? Yes. Yes. So next question, students, fifth question. Triangle APB is formed by three tangents to the circle with center O, right? If बेटा यहाँ पे triangle लिखा है, it should be angle APB equal to 40 degree. Then the measure of the triangle की जगह angle आना चाहिए. BOA. See, I'll draw the diagram. Then next. This is the circle, students. Now there are three tangents. One is this. Another is this. All these three are tangents. Their names are PR. This is PT, right? And AB. These are three tangents drawn to the circles. If this angle is 40 degree, this angle is 40 degree, but we have to find the measure of the angle BOA. We have to find this angle. Yes, student, how we can do it? Yes. Will you try this question? Student, yes or no? Will you try this or not? आवाज नहीं आई. चलो कोशिश करो बेटा करने की इसको. You have to find angle BOA.
सर एक्सप्लेन कर दो क्वेश्चन ये वाला. First of all, what you can do? 140. हाँ जी 140. इसकी स्टूडेंट की आवाज आई. प्लीज रेज योर हैंड जिसने बोला बेटा. यस प्लीज कम एंड एक्सप्लेन हाउ यू हैव डन इट. प्लीज कम बच्चे. आ जाओ बेटा आ जाओ. प्लीज एक्सप्लेन हाउ यू हैव डन इट. अरे who was this 140 किसने बोला था बेटा. टीचर प्लीज स्टैंड द स्टूडेंट्स who was say answering 140. Yes please explain बेटा. Sir, 40 degree plus x equal to 180 degree. अच्छा अच्छा बट उसमें कंडीशन नहीं होती है. क्या कंडीशन होती है. देखिए वो जो आप बोल रहे हो थोड़ा सा मैं डायग्राम को दोबारा बना देता हूँ. ये वाला एंगल होता है बेटा वो. अगर ये 40 है इज द सेम एंगल. इज इट सेम. हाँ जी बेटा. No. So this is the difference. How to do this? So first of all, meet these two radii. What is this angle? Now थोड़ी सी इसमें कंस्ट्रक्शन होगी ध्यान से देखना बच्चे. This is O, this is R, this is. We have meet this. Now we know that OP bisects the angle P. So what will be this angle now? 20 degree. 30 degree. Yes. What will be this angle? Tell me. Angle sum property. बच्चों this is 20, this is 90, this will be 70. This angle is 70. Similarly, this will also be 70. Yes. तो ये वाला 140 बन रहा था बच्चों. Now we have to find out angle BOA. How to do this now? आपके पास ये total angle 170 आ गया. Sorry, 70 degree आ गया. How we need to find out this one? Yes. अब क्या कॉन्सेप्ट लगाएं बच्चों यहाँ पे. देखिए this angle is given 140. Now this is also tangent. If the if these two are equal, but this is not given these are equal. If we assume these are equal, then these two angles will be equal, right? Yes or no? बच्चे ये एक AP PAB, this will become an isosceles triangle, right बच्चों? Yes. So what is the measure of this angle? Or what we can do, we have this angle as 90. What will be this angle, students, then? 40, 140. That will also be 70. This will be the same angle, this. So we have to, मैं जरा एक बार दोबारा डायग्राम बनाता हूँ बच्चे इसका. थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करते हैं इसको. Right?
Right. Now, students, sum of these two angles will be 140. Let's say this is A, this is B. We can't assume this is an isosceles. This is not given, so we can't assume that. So the sum of 40 plus A plus B equal to 180 degree. So what is the sum of A plus B? 140 degree. Is this clear, bachcho? Is this clear or not? Yes. Now we don't have this as 90, so we have to find the angle this. So this will also be, if you draw this and this is 90, this is also 90. If we can find out this angle, we'll be able to find out this angle. Now this angle is 40, this total is, इसको meet करा दिया बच्चे, तो this angle is your 70. This is also 70. यहाँ तो कोई doubt? No. Right. So but we need this angle. फर्स्ट पीरियड ओवर हो गया. है जी? अभी से कहाँ से ओवर हो गया बेटा? 9:30 तक नहीं है? मैम, our class is till 9:30 ना? Sir, kindly continue. Okay. So POV. Okay. We don't have any other information in this. Okay, students, one more concept what we can apply. Let's say this point is C. This tangent and this tangent are same. Right or not, Ji? Students? Students, can you hear me? Yes. Yes. ये देखिए, ये दोनों tangent भी same हो जाएंगे. Yes. So this angle is 70 degree. What will be this angle then? 110 degree. ये वाला जो triangle, ये angle जो है, angle B, this will be 110 degree. Yes. ये जो हमने कॉन्सेप्ट लगाया है यहाँ पे, दिस एंगल, ये दोनों का सम जो हुआ है, दैट विल बी 180 डिग्री. इफ दिस इज 70, दिस विल बी 110. और ये बाइसेक्टर होगा इसका. अगर ये बाइसेक्टर है तो दिस एंगल इज 55 डिग्री. राइट? Yes. सो व्हाट विल बी दिस एंगल देन? This part will be 90 degree. This is 55. 90 minus 55. This angle is 55. So we have to find this total. ये total बेटा 55 हो जाएगा. कैसे होगा? देखो. ये देखिए जो बच्चे हमारे पास जो एंगल आया है, this angle comes out to be 55. This angle and this total angle will be same. Right? आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है बच्चे, ये जो एंगल होता है ना, इसका डबल होता है जी. ठीक है, वहां पे इसमें डिटेल में प्रूविंग है. सो दिस एंगल विल बी 55 डिग्री. एनसीईआरटी है आप लोगों के पास? एनसीईआरटी इज देयर? Sir, yes. ओपन इट्स एग्जांपल्स. एग्जांपल आई थिंक सेकंड एग्जांपल है इसका. ये स्टूडेंट्स, सो द एंगल इज ट्वाइस वाला कुछ क्वेश्चन है ना बेटा ये. Yes. तो सेम कॉन्सेप्ट लग के ना, दिस इफ दिस एंगल इज 55, दिस टोटल विल बी 55. राइट? देखिए बच्चों,
ये देखिए हमने क्या किया, इसको मीट करा दिया। ये एंगल हमारे पास 70 के आगे थे जी, राइट। क्लियर है? व्हाट विल बी दिस एंगल? ये वाला एंगल कितना है बच्चों? 55. This is also 55. This angle will be double of this angle, right? अगर ये x है तो बच्चे ये 2x हो जाएगा. Now this total is 2x. So 2x will be equal to 2x. That will be 55 degree. Clear है? Yes or no? कोई डाउट इसमें बेटा? हाँ जी स्टूडेंट, हाँ जी. Shall we move to the next question? Sir, time is up. Okay, we'll continue in the next class.